जय मां शाला पिला माने मो सोमनाथ आपण मानक साथ किछि सारदा फिजिक्स अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म को पिला माने आ पूर्व क्लास रे हमें थर्ड यूनिट टोटल सारी दितलो तो या सहित हमर मैथमेटिकल फिजिक्स 2 रो फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट से दितलो तो ए क्लास रे हम स्टार्ट करियो फोर्थ यूनिट सो पिला माने फोर्थ यूनिट रे तमर कोन अछि ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अछि और जोतरे की सब बढ़िया इंपोर्टेंट जिंस देइ जोटा कहै छै वेरिएबल सेपरेशन मेथड वेरिएबल्स सेपरेशन मेथड में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को केमिति सॉल्व करबा अब मोस्ट ऑफ द केसेस रे एगुडा करे यूजफुल माने एप्लीकेशन अछि हम फिजिक्स रे एबे नो बहुत आगु भी रहि छी तो एगुडा सब जगह में देखिबा सो ए क्लास हम स्टार्ट करबा कोन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ तो मु फास्ट तो किछिटा जिंस ही कहि देबी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर तो मोस्ट ऑफ द हमर फोकस रहबा कहा पर ना मोस्ट ऑफ द फोकस हमर रहबा प्रॉब्लम सॉल्विंग ऊपर तो प्रॉब्लम गुडा केमि सॉल्व करबा देन आपरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो रहि जाई छी माने एप्लीकेशन उडा जेंदे लाप्लास इक्वेशन और डाइलेक्ट्रिक स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर में अलग अलग अछि तो मोस्ट ऑफ द केसेस रे दी दिन ही लागिबा को साइबा में सो तमरो सेमेस्टर भी पाखे जेसी तो हम स्टार्ट करबा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन माने हम स्टार्ट करबा कोन ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कोन कि डिफरेंशियल इक्वेशन कोन जोडा कि माने डेरिवेटिव सम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल किमा वेरिएबल्स को नेइकरा तेरी तो सेला डिफरेंशियल इक्वेशन सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कोन बोझी the equation containing partial derivatives containing होतो equation ता with independent variables are called the partial differential equation किछरा independent variables सहित किछरा partial derivative contains करथुवा तो हम तो कोन करबे पिला माने ता partial differential equation कहला for example if x comma y be any independent variable of u variable and u be the dependent variable then the partial differential equation is given by differential equation ना मोर तंटी टे खराब अछि आ तापर भी मते बहुत दिन हलानी ज्वर अछि छाडली तो सेते मु रेगुलरली क्लास भी अपडेट करि पाबी बाकी ये जहां भी चित्र सेमेस्टर भीतर सॉल्व जिवो ओके सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is given by partial differential equation कौन कहबो a of x y del u upon में del x plus b of x y del u upon में del y देखो एतिटा जदि माने इंडिपेंडेंट न हिता त कैंसिल आउट हिता so plus c of x y of u equal to a of x y এটা হচ্ছে পিলা মানে কোন না ଗୋଟେ linear first order partial differential equation this is a linear first order partial differential equation okay so यहाँ पर हमें कौन देखना ना इधर कौन होची ना all of the coefficients are independent of u and its derivatives are each term is linear so it कौन होची ना note all the coefficients are independent are independent of u and its derivatives also अच्छा एथिरे ये जो कोएफिशिएंट गुडा अछि एगुडा कर माने डेरिवेटिव्स
आउ एगुडा को निजे ही इंडिपेंडेंट कहा ना ए जो y रो कि x रो u रो सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ u ओके सो ये थिला पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देन आमे बे स्विच करबा कोठी कि ना वेरिएबल ऑफ सेपरेशन सो पिला माने तार ना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कोन पे हला कारण आमे सेठी गोटे एलएचएस नोछ आरएचएस नोछ देखो फास्ट तो मु कहि परनी माने जेतरा मु स्टेप गुडा को कहिबी सेगुडा तो पूरा एमती प्रोग्रेस टाइप रे ही अछि माने फास्ट तीनटा चारटा स्टेप तो पूरा प्रोग्रेस टाइप रे अछि देन जेतले माने मु तो भाबुची एटा बोधे माने प्लस 2 टाइप रे बोधे हेइथिबो माने करिथिबो एटा सो जहाँ भी अछि तो आमे आ थरे ताको रिकैप करनो सो कोन ना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड separation of variables देह माने जमा भल ही होनी कासो कमुनी तथापि ओके सो आर स्टेप 1 कोन रहिबो स्टेप 1 कोन रहबा देखो जेमति हमें प्रोबेबिलिटी मेथड रे हमें अज्यूम करथले गोटे सॉल्यूशन अज्यूम करथले तापर ताको लेकिना काम करथले एठी सेमति हमें अज्यूम करिवा सॉल्यूशन assume the required solution solution हमें नबा कोन ना u of x y equal to capital X of x and y of y okay so हमें सेम जिंस एठी नबा assume करिवा solution then step 2 रे हम कोन करिवा step 2 रे हम कोन करिवा calculate the required derivatives जति क्वेश्चन रे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखो तो हमें आर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बात करबा जति क्वेश्चन रे आर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो तो हमें आर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव काढबा ओके सो कोन आसी सेटा देखो वेरिएबल सेपरेशन हम कोन करू ना गोटे टर्म को कांस्टेंट नो आ गोटे टर्म को डेरिवेटिव करू देन पुनी थरे सेकंड टर्म को कांस्टेंट नो आ गोटे टर्म को डेरिवेटिव करू सो फर्स्ट हमें कोन करबा ना del u को हमें del x रेस्पेक्ट रे डेरिवेटिव नवा सो कोन आजो कांस्टेंट ना y आसीबो y del कैपिटल x अपॉन स्मॉल x कारण हम स्मॉल x से एक्सपेक्ट किते ताको हमें डेरिवेटिव करछे हला तो गोटे को कांस्टेंट लेले आ गोटे को डेरिवेटिव करले देन सेकंड रे हम सेम ही करबा कोन करबा ना del u by del y del u by del y sorry capital y del small y equal to capital x del capital y upon del small y আসছে না ঠিক আছে ओके और if required जदि दरकार पड़ला कोन ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जदि दरकार पड़ला and if required then हम कौन करिबा the del square u upon del x square equal to कोन आसीबो ना y कांस्टेंट तो रहइबो आकु कोन थरे डेरिवेटिव कर आकु पुनी u and v फार्मूला रे पडिबनी एठी y कांस्टेंट रहइबो देन कोन थरे डेरिवेटिव del square u upon del y square equal to x del square capital Y upon del y square okay so ये थिला कोन ना सेकंड स्टेप देन हमर थर्ड स्टेप कोन रहइबो ना ए जो डेरिवेटिव हमें बाहर करे सब्स्टिट्यूट द डेरिवेटिव इन द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन step 3 step 3 substitute the derivatives into the partial differential equation
ओके सब्स्टिट्यूट करे देन स्टेप 4 कोन आसबो ना स्टेप 4 रे हम कोन करबा ना x तो गोटे टर्म कैपिटल x तो गोटे टर्म ताको हम कोन करबा डिवाइड करबा कोथरे ना से जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन divide xy that partial differential equation so that they separate जेहेतु हमरा एटा वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड त हम सेपरेट करिवे दीटा अलग अलग वेरिएबल हला सो दैट दे सेपरेट each with with independent variables ओके सो जेमति के कोन हबो ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सेपरेट हिजो जतो हमें x तुमे माने देखो एबे तुमे केवल एटा देखो हम कोन था लिखुछ तने स्टेप बाय स्टेप जिंसडा जानि था नेक्स्ट टाइम जतो अप्लाई करबी क्वेश्चन में तो सेटा बुझियो के माने एमिति कोन ना आसीबो भी नाही कि सेपरेशन वेरिएबल मेथड स्टेप गुडा लगे एमिति कोन आसीबो बस तमे बुझिबा पई जिंसडा लिखुछ हला तो सो स्टेप बाय स्टेप तमे जिंसडा जानि ल माने थ्योरेटिकल टाइप रो जानि ल तापर तमे क्वेश्चन अप्लाई कर तो तम पे इजीएस्ट हो so it has a step 4 then step 5 step 5 कोन बुझी अच्छा एबे हम कोन करबे देखो जेतो हम x y डिवाइड कर सारे पर डीटा कोन हिजो डीटा सेपरेशन वेरिएबल डीटा को ये हिजो सो नेक्स्ट टाइम कोन करे इंट्रोड्यूस से सेपरेशन कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करे कोन देखो जेतो माने गोटे टर्म x रे माने बुझी परिबो गोटे पूरा टर्म x रे पळेछ आ टर्म पूरा y रे पळेछ हम डीटा जको प्लस k किमा माइनस k रो कांस्टेंट कोन न इंट्रोड्यूस ए सेपरेशन कांस्टेंट a separation constant may be k or minus k ओके k और minus k हबो कोन ना सेपरेशन कांस्टेंट देन तापर कोन करिबा स्टेप 6 solve the resulting ordinary differential equation ओके सो नेक्स्ट टाइम कोन करबा देखो जता हम k और -k को इंट्रोड्यूस करनो देन से दीटा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म को पळे आइसो देन हमें ताको दीटा को सॉल्व करे दीटा सॉल्व करिना तार जो भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन आछो ताको मिसे देले हे जो कहार सॉल्यूशन ने सेपरेशन वेरिएबल मेथड रे हम कहार ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जोटा हम पास्ट नै थिबा तार सॉल्यूशन आसी ओके सो स्टेप नंबर 7 कोन कंबाइन the solution of the ordinary differential equation which gives the resulting solution of partial differential equation okay partial differential equation ना सॉल्यूशन आछो एबे हम पिला कोन करबा एबे हम देखा प्रॉब्लम करबा ओके सो इंपोर्टेंट माने एटा हम लॉन्ग क्वेश्चन एसए हम कहि करनी किंतु तथापि तो तुम तो एटा ऑलरेडी तुम फर्स्ट टाइम पढि थिबो सो एटा केवल रिकैप्सुलेशन होइला देन हम दीटा प्रॉब्लम कर दवा ए प्रॉब्लम रे बहुत गुडे स्टेप हम करबी किंतु सेम जिंस लाप्लास इक्वेशन न अछि कि तुम से स्टेप गुडा को ओमिट करबी ओके
सो देखो एठी हमें जो प्रॉब्लम गुडा करी मु पूरा डिटेल स्टेप गुडा करी किंतु नेक्स्ट जेता मु लाप्लास इक्वेशन जेता ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कारण ऑलरेडी तुम प्लस 2 रे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन केमिति हम सॉल्यूशन बाहर करबे जानिछो देन सेकंड रे तुम फर्स्ट ईयर रे से विषय अवगत अछि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सब अछि आ ए विषय तुमको निजो खटिया पड़ो कारण मु एबे जदि देखै भी देबी तब तुम सेति के सॉफ्टवेयर जगह ही तुम जानिबो आ जोटा कि तुम माने इन फ्यूचर तुम पे बहुत ही माने मिस्टेक हबो सो एबे मु एटी पूरा भल से करबी जो प्रॉब्लम दिता देछि नेक्स्ट रे जेतले लाप्लास इक्वेशन मु करबी सेतले मु स्टेप ओमिट करबी ओके सो फर्स्ट प्रॉब्लम पिला माने कोन देछि solve 3ux plus 2uy equal to 0 where ux equal to del u upon del x then uy equal to del u upon del y okay so it is the equation so I will come to solve it solution here we have so पिला माने हमरा फास्ट हमर फास्ट स्टेप कोन थिला हमें लिखुथिले कोन ना आपको लिखुथिले u x जगह u x होगा del u by del x plus 2 del u by del y equal to कोन देछि 0 equal to 0 नेक्स्ट हम कोन करथिले फर्स्ट स्टेप रे हम पिला माने कोन करथिले ना अज्यूम करथिले कोन अज्यूम करथिले assume the required solution be हला assume करथिले required solution कोन ना u of x, y equal to capital X of x and capital Y of y okay so assume करथिले एटा देन हम कोन करथिले ना डिफरेंशिएट करथिले कहा आपको दे दबा इक्वेशन नंबर 1 देन आपको दे दबा इक्वेशन नंबर 2 तो हमें सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करथिले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रे देखिला फर्स्ट ऑर्डर माने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हे छै सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन तो हमें को थोड़ा थोड़ा डेरिवेटिव करबा सो नाउ differentiate equation number 2 partially with respect to x ओके सो पार्शियली मु जतले डिफरेंशिएट करैथिली सेठी त पिला माने सेठी मु कोन करथिली ना गोटे टर्म को कांस्टेंट लेथिली जो टर्म को डिफरेंशिएट करछि ता टर्म मु डिफरेंशिएट करथिली सो एटा मु कोन लिख परबी ना del u upon my del x एटा मु केवल एबे ही करछि कारण लाप्लास इक्वेशन मु डायरेक्ट पुट करबी ओके सो del u upon my del x इक्वल टू कोन आसीबो ना y कांस्टेंट देन del कैपिटल x upon the small del x सिमिलरली हमें कौन लिख परबा ना del u upon my del y equal to capital X constant आसीला देन del y upon my small del y ओके सो एटा डिफरेंशिएट हला पार्शियल देन हमें कौन करबा आको पुट करबा कोथे ना इक्वेशन नंबर 1 नाउ पुट द वैल्यूज नाउ पुट these values on equation number 1 equation number है हमें ये वैल्यू पुट करना ओके सो मैं पुट कर कौन आसीबो ना 3 into y of del capital X upon my del x plus 2 into x of del capital Y upon my del small y is equal to 0 एटा कोन हला के माने ना एटा हमें जतबळे ए जो थिको हम बाहर कले डिफरेंशिएट कले पार्शियल डिफरेंशिएट करी कि ना हम जो जिंसटा बाहर कले ताको हम पुट करे कोथरे ना इक्वेशन नंबर 1 रे पुट कले एबे पिला माने देखो ई दीटा रे एठी ओटे y कांस्टेंट रहि जो एठी ओटे x रहि जो ना तो आको हमें माने केवल LHS टा x ओनली रे रहितो आ y टा y ओनली रे जो RHS टा y ओनली रे रहितो तो सेति पे हमें कोन करबा डिवाइड करबा कोन करबा डिवाइड करबा कोन डिवाइड करबा x पे डिवाइड करबा सो डिवाइड xy
on equation number 3. Equation number 3. Okay, so equation number 3 रे पिला माने अच्छा छाड़ा ठीक अछि। सो इक्वेशन नंबर 3 रे हमें कम करबा माने मु ताको इक्वेशन नंबर दो भूली जाइछि। सो इक्वेशन नंबर 3 हमें कोन डिवाइड करबा x रे डिवाइड करबा तो आसी जो कोन ना 3 अपन में x कारण y कैंसिल हो जाला del x अपन में स्मॉल del x प्लस 2 अपन में y del कैपिटल Y अपन में del स्मॉल y इज इक्वल टू कोन आसीबो 0 आसीबो। देन हमें कोन लिख परबा ना 3/x del x अपन में स्मॉल del x इक्वल टू माइनस 2/y del y अपन में स्मॉल del y। नाउ look the equation number 4. Look the equation number 4. Okay, so equation number 4 कौन अछि पिला माने ना the LHS is depends on independent of y only is independent of एक है dependent में independent of y only and the RHS is independent of x only. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हेला नै वेरिएबल कोन थिला ना x आ y गोटे पटे केवल x रो टर्म रहइबो आ गोटे पटे केवल y रो टर्म रहइबो। ओके, सो independent of x only. Now we can take the separation constant which is k. ओके देखो एठी जदि मु k नेबी त एटा माइनस k हो माने 2/y del y कोन हिजो माइनस k हिजो आ एठी जदि मु k कोन नेली तो केवल k रहबे कारण एठी माइनस टर्म अछि प्लस टर्म अछि। ओके, सो आको मु सेपरेटली सॉल्व करबा अपेक्षा एठी सॉल्व करि देखौची। एठी मु मझरे गार कानी ना दी साइड रे एका संगे सॉल्व करची। बड़ा पिला हलानी गोटे गोटे स्टेप तुम ओमिट करा हबो सेबडा सब देखिबो जानिबो चिन्हिबो। is function of x only and okay अच्छा बोलता लिखी ठीक तो लिखी छी मैं एमती लिखता हूं ठीक है। ओके, now we can do this LHS ठीक है मैं लिख सकती that is लेवल कौन आसीबो ना 3 by capital X del x upon my small del x is equal to k and also minus 2 upon my capital Y del capital Y upon my small y is equal to k तक मैं माइनस k भी कर परिबा। ओके, ये कर दो। ओके, सो आपको मैं कौन लिख परिबी ना कैपिटल del x upon my capital X equal to k by 3 del x small del x then that we call it maybe na del y upon small del y equal to minus k divided by 2 of capital Y 2 अरे बाप रे capital Y by 2 और रहेगा then it is small del। अच्छा both side रे इंटीग्रेशन कले कौन आसीबो we now integrate both side ओके। सो एपट भी इंटीग्रेशन करबे माने एपट इंटीग्रेशन करबे। सो एटा कोन आइसबा ना log x log कैपिटल X इक्वल टू k by 3 नॉर्मल इंटीग्रेशन del x रो कोन आइसबा ना x k by 3x जेहेतु हमर इंटीग्रेशन में जेहेतु अपर लिमिट लोअर लिमिट नाही ताले कोन होस जो प्लस कांस्टेंट जे हम कोन कहबा ना c1 दे चलिबो c1। ओके, सेमति हम कोन लिख करबी ना log कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस k by 2 y plus c2 ओके। सो c1 c2 हम दीटा नेले
एबे हमें कोन कर परबा देखो एपटे log x अछि एपटे log y अछि तो आकु मु एबे कोन लिख परबी ना e टू द पावर नै परबी माने अरे log टर्म टा को मु आकु कोन लिख परबी ना कैपिटल x जदि मु बाहर करबी तो कोन आसीबो ना e टू द पावर k/3 of x plus c1 then e to the power minus k/2 of y plus c2 अच्छा x पाइले एया y पाइले एया then next मोर स्टेप कोन थिला ना हमें u of x, y हमें कौन नहीं थे ना कैपिटल x into y of कैपिटल सॉरी स्मॉल y ओके सो नेक्स्ट टाइम हम कौन करबा सॉल्यूशन पाए बोले कौन करबा ना दिखे जाको पुनी दावा so okay so ebe putting these values on equation number 2 we get हमें कौन पाइबा इक्वेशन नंबर 2 रे हमें जेतला को पुट करबा हमें कौन पाइबा ना u of u equal to e to the power k/3 of x plus c1 into e to the power minus k/2 of y plus c2 अच्छा मैं को इनके कौन लिख परबी ना e to the power k को कांस्टेंट ले ली देन x/3 minus y/2 ओके देन ताको मु प्लस c1 plus c2 के लिख परबी देन मैं को कौन लिख परबी ना e to the power k of x/3 minus y/2 into e to the power c1 plus c2 then এটা দেখো e to the power c1 plus c2 constant term as is one नहीं so मैं को कौन लिख परबी ना u equal to a into e to the power k of x/3 minus y/2 এটা হচ্ছে পিলা মানে কোন this is the required solution this is the required solution of given partial differential equation okay so एटा थिला पिला माने हमर कोन ना गोटे प्रॉब्लम थिला नेक्स्ट प्रॉब्लम देखबा हमर कोन अछि ओहो जरडा भलो होनी जमा कहीं मुझे कोरोना तो हो नहीं गया तो तुम सेमिस्टर का पाठ्य सारणी है आ गोटे दी दिन क्लास दिसबी नहीं नेक्स्ट पेपर तुम होना मैथमेटिकल फिजिक्स 3 इयर का आज कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ताकि भी करिया देन फर्स्ट ईयर आप मैं फर्स्ट ईयर क्लास लेबी जे भाई बहन थे मुझे शेयर करना ओके प्रॉब्लम नंबर 2 solve the following del square z upon में del x square एटा होछ कोन है सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री minus 2 del z upon में del x plus del z upon में del y is equal to 0 by the separation of value अच्छा एटा पिला माने तो पता आसी पहले ने ये आसी पहले तीन मार्क के आसी पहले separation of value okay so solution in conclusion लिखा del square z upon में del x square minus 2 del z upon में del x plus del z upon में del y is equal to 0 देन हमें कौन करथले अज्यूम करथले अच्छा पिला माने सेठी u नेथिले एठी देखो जेतु z अछि तो देखो सेठी u थिला मु u नेथिले एठी z अछि मु z नेबी assume the required solution be the equation number 1 solution b
the z of x comma y equal to capital A x of x and capital Y of y, where capital X is function of small x and only small x, and the capital Y is the function of small y. Now देखो एटा कोठी गोटे अछि डिफरेंट डेरिवेटिव इज h टर्मिनल. नाउ differentiate the equation number 2 with partially differentiate equation number 2 with respect to x partially. हम कौन पाइबा ना del z upon del x equal to y constant ରହିବ del square x upon del capital X, del square capital X upon small x. Okay, so next one sorry del x. Now further differentiate the equation number 3. The equation number 3 partial, we get on the del square capital X upon the small del square z upon the del x square equal to y of del square capital X upon del x. Their equation number 4. Next time कौन करेगा? अच्छा एटा था आप सब लिखते जी हम सेटा में पुट करबा ना तो तुम डायरेक्ट देखिए सुविधा हो. अरे चलो now सब partial या partially की समझ लीजिए. now differentiate equation number 2 with respect to y partial. कारण एठी गुटे टर्म अछि त हम थोड़ी ही डेरिवेटिव करिए जदि del square z y del y square था तो हम तक डिफरेंट डेरिवेटिव करते हैं. ओके, so del z upon del y equal to x constant del y upon this equation number 5 दिया. Put the value of equation number 3 4 5. अरे बाप रे ये भी छाड़ चलो. Put the value of equation number 3, equation number 4 and 5 is equation on equation number 1 we get and कौन पाइबा ना del square z पिला मन तम कोन आस्तला ना y of del square x upon small del x square minus 2y del x upon small del x plus x of what is ना so plus x of del y upon del. ओके, सो नेक्स्ट टर्म पिला माने हमर कोन थिला ना डिवाइड करबा कोन ना xy. नेक्स्ट स्टेप डिवाइड xy on above equation we get पाइबा कोन पाइबा ना xy डिवाइड कर ले हमने कोन 1 by x del square x upon small del x square minus 2 by x upon small capital del x small del x plus 1 by y del y upon small del is equal to 0. So हम कौन लिख भी ना 1 by x
del square x upon में del x square minus 2 by x del x upon में small del x equal to minus 1 by y del y upon में small del y. Now equation number 5 है पढ़िए equation number 2. Now equation number 6 represents represents the LHS is function of x only, and the RHS is function of function of y only. RHS का y only रे function और एपट का x रा function. So now we can write आमे गोटे कोन इंट्रोड्यूस कर परिबा ना सेपरेशन कांस्टेंट. Now we can introduce now we can introduce a separation constant which is k. Okay, so k हमें introduce करेगा. नेक्स्ट मैं जो लिखने दूची एठी डायरेक्ट ही करबी. वन बाय x del square x upon del x square minus 2 del x upon small del x equal to k. So one del square capital X upon small del x square minus 2 del x upon small del x is equal to kx. Okay, so এটা কোন আসলো এটা বিপরীত নিয়ে আসলে কোন আসলো না del square x upon del x square minus 2 del x upon small del x minus kx is equal to 0. এটা capital X. So एठी पिला माने ऑक्सिलरी देखो जेता हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करू सेता हमें कोन लिखो एटा ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो. सो एठी पिला माने ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म अछि ना d स्क्वायर माइनस 2d माइनस k of x is equal to 0. तो आर सॉल्यूशन पिला माने कोन एठी ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन कोन ऑक्सिलरी इक्वेशन कोन ना m स्क्वायर minus 2m minus k is equal to 0. Okay, so m ର value कोन आसला ना minus b minus sorry plus b plus or minus root over of 4 plus 4k upon 2 b plus or minus 4ab plus 4k by 2. then ଏବେ ଆମେ କଣ ଦେଇଯିବା ନା 2 କମन ନେଲେ କଣ ଆସିବ ନା 2 of এই ইকুয়েশন কে আমরা সলভ ହେଇକିନା আমরা যে ভ্যালু সো এটি 2 কমন নেলে 2 বাহারে আসବ বাহারে আসলে এটি ରହିବ କଣ 1 plus 1 minus 1 plus k root over. Okay, so solution कौन होगा ना x equal to c1 e to the power 1 plus root over 1 plus k of x plus c2 e to the power 1 minus root over 1 minus k of x. Okay, so similarly हम कौन करिबा ना बाहर कर परिबा का पे ना सेकंड टर्म पे. so second thing कौन होइबो ना माइनस एटा तो पूरा इजी रहबो -1 by y
then del y upon my del एटा देखो एटी मो एटा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर देखो जे नेक्स्ट टर्म जोडा के रहयो हम सेटा ताको स्टेप गुडा को ओमिट करबी सो एटा तम दायित्व कि तमे याकू पूरा करबो ओके ठीक अछि सो हम ऑन इक्वल देन del y upon small del y is equal to minus ky then del capital Y upon small del y plus ky is equal to 0 then auxiliary equation to bonus one m plus k is equal to 0 that is m equal to plus sorry minus k that is y is equal to c3 अच्छा 5 नंबर इक्वेशन पढ़ितला 6 नंबर में एटा कि मैं जब 6 नंबर लेता तो लेता 7 नंबर then c3 e to the power minus ky that is 7 number equation. So now put the values of equation number 7 and equation number 6 on equation number 2. Now put the value of equation number 6 and 7 on equation number 2. Then we get कौन पाएगा ना z पाएगा z equal to c1 of e to the power 1 plus root over of 1 plus k of x plus c2 e to the power 1 minus root over of 1 plus k root over 1 plus 1 minus 1 plus k then into c3 of e to the minus k एति जदि तमे लिखिबो एटा भी किछि भी भूल हबो नाही so this is the required solution it is required solution okay कार ना given partial differential equation solution of लिखलो मजा लगे solution of given partial differential equation okay so एटा होचे partial differential equation so पिला माने एटी हम कोन देखिले ना separation of variable method रे बा variable separation method रे कहारा partial differential equation हम सॉल्व कले बाकी ड्रेस ऊपर जीवनी ड्रेसटा मोर ढिला होजी आ रहिला नेक्स्ट क्लास के हम देखबा लाप्लास इक्वेशन रो तीनटा माने अछि कोऑर्डिनेटर जेंति कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट देन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट तीनटा कोऑर्डिनेट अछि तीनटा एगो लॉन्ग क्वेश्चन देन तापर आ तीनटा लॉन्ग क्वेश्चन टोटली आ रहला 6टा लॉन्ग क्वेश्चन 2 दिन रे शेष हबो सो ये था आज क्लास रहली जय जगन्नाथ जय मां